Hello, guys, and welcome back once again. What is it that we do today? I hope you can see it out there. I hope you've seen it on the thumbnail. We are discussing some very common but very interesting things. These are the things that you have started to know just about, and that is why I have some five fun facts about Quarks in this session for you. I hope you know me. My name is Udit. In case you don't, I would like to tell you once again who am I. I'm this guy. See this guy? See this guy. Same guy, right? My name is Udit Gupta and I love physics. And I have taught more than 2 lakh kids. Let's hope you are the next one out there and can learn a lot of new and interesting things in physics in this session. Let's go ahead. Let's see what we have. Now, if I start off, I am trying to dissect an atom. खोल के देखते हैं एटम में क्या है. What do you find? I hope everybody can see. एक यहाँ पे आपके पास एटम दे रखा है, एक यहाँ पे आपके पास एटम दे रखा है. Everybody knows this basic thing कि आसपास कुछ गोल गोल घूमता रहता है, right? बीच में कुछ अजीब सा होता है. I hope you know the names of these things. Even if you don't, so let us start trying to see what are these things in atoms. So if I see this atom, this is one full atom, right? बीच में क्या है? What do you see at the center? You see some red balls, you see some blue balls, and आसपास जो घूम रही है, you can see a lot of gray balls or silver balls. तो क्या ये डिनोट करता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग. ये बीच में जो न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें रेड बॉल्स को हम बोल सकते हैं कि दीज आर प्रोटॉन्स. Similarly, if I talk about the blue balls, these are neutrons. एंड फाइनली अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे ये ग्रे वाली बॉल्स कौन सी है, तो आप बोलोगे ये ग्रे बॉल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. ये सबको पता है, काफी बेसिक इंफॉर्मेशन है. दिस ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज. बट इसमें एक और चीज है जो आपको पता रहती है, विच यू विल टेल मी क्वाइट इजिली कि इफ आई टेक द सेम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज, या आप कहते हो इसे चार्ज लेस, चार्ज विहीन, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. फाइनली इफ आई टॉक अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, यू से इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, दैट उस पे एक माइनस चार्ज है, राइट? बट नाउ कम्स द थिंग that is more interesting. This is a big misconception that a lot of kids have. I hope your misconception would go away. अब सबको ये पता रहता है कि I know कि ये जो हमारे पास एक एटम है, this is an atom, nucleus, electrons going round and round and round. इसमें लोगों को ये पता होता है कि ये न्यूक्लियस में जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, the yellow and the green particles, that is the protons and the neutrons, people know that इनके पास होते हैं केवल 3 quarks. Everybody knows that proton and neutron have only 3 quarks. So this is a wrong information. Beep. This is wrong. You should know कि 3 quarks तो होते हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा है. देयर इज समथिंग स्पाइसी हियर, समथिंग दैट यू डोंट नो, व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू वंस वी गो अहेड. तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. अभी आपने ही बोला मिसकंसेप्शन सेज कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव 3 क्वार्क्स ईच, तो दोनों में डिफरेंस तो कुछ रह ही नहीं गया. आपको अगर डिफरेंस, ये देख रहे हो, ये बच्चे को यही डाउट आया था. इसको डाउट आया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाउ आर दे डिफरेंट इफ बोथ ऑफ देम हैव 3 क्वार्क्स ईच. तो लेट मी ट्राई टू टेल कि इसमें क्या होता है. सॉरी, इफ आई टेक यू टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ क्वार्क्स, it's a very interesting theory. There's a lot of facts that you can know about it. I'll just tell you a little bit over here. So if you want to know what is a quark, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पार्टिकल्स जो दोनों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके पास अलग अलग क्वार्क्स थे. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स. एंड इफ यू विल ट्राई टू फाइंड, आपको मिलेगा प्रोटॉन पे ये 3 क्वार्क. व्हाट आर दीज 3 क्वार्क्स? ये यू डी यू, व्हाट इज दिस? U is for up,
D is for down. Similarly, if I talk about a neutron, तो न्यूट्रॉन पे there are two D and one U. If you are wondering what exactly does this mean, तो आप पहली चीज let's throw away our misconception कि these are what we call as valence quarks. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस जो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास वैलेंस क्वार्क्स है, राइट। ये आपको इंक नहीं दिख रही होगी, आइए व्हाइट में करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैलेंस क्वार्क्स है। और वैलेंस क्वार्क का मतलब क्या है कि these are the quarks that are different from all the other things that are there in proton and neutron. We will try to look at that, but first let's try to see कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या। नाउ द थिंग इज कि U का मतलब है कि आपके पास ये एक अप क्वार्क है, और D का मतलब क्या है? D का मतलब है कि दिस इज अ डाउन क्वार्क। U की जो वैल्यू होती है आप बोलोगे कि दिस इज समथिंग एज प्लस 2/3, और डाउन कॉर्क की जो वैल्यू होती है ये होती है -1/3। तो आप अगर मैथ्स करोगे, इफ यू डू द मैथ्स करेक्टली, यू विल सी कि इट हैज 2U एंड 1D, यानी कि इसके पास 2 इंटू 2/3 ये प्लस का चार्ज है, और माइनस का चार्ज है 1D ओनली, यानी कि -1/3। आप देखोगे तो ये टोटल में +1 आएगा। And why is it +1? Because you know proton is positive, right? ये जो हमें पता चला कि ये UUD है, प्लीज रिमेंबर these are not normal quarks, these are going to be called as valence quarks. अच्छा, चलिए न्यूट्रॉन से पूछते हैं। न्यूट्रॉन आपके केस में क्या है? तो न्यूट्रॉन कहता है जी हमारे पास 1U है एंड आई हैव 2Ds. दिस मीन्स इट हैज प्लस ऑफ 2/3 एंड देन इट हैज माइनस ऑफ 2D है, तो 2 इंटू 1/3। तो इफ यू सॉल्व दिस आउट, दिस विल बी +2/3 -2/3, और ये आ जाएगा अंडा, दैट इज 0। एंड यू नो दैट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज चार्जलेस। वी कैन प्रूव दिस एज वेल। But again, I would like to say, do not remember that both of them have 3 quarks. Remember, they have 3 valence quarks. आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जानने के लिए काफी कुछ नई चीजें हो गई हैं। There is more to this. What exactly is more to this? तो हम बोलते हैं कि आप अगर एक प्रोटॉन को देखते हो, a lot of people will say, सर 3 quarks हैं। 3 वैलेंस क्वार्क्स हैं, 3 वैलेंस क्वार्क्स आर देयर। तो इसमें क्या दिक्कत है, या इसमें क्या होता है कि आपके पास अप और डाउन क्वार्क तो होता है। यू कैन ऑल्सो कॉल देयर आर पार्टिकल्स एंटी अप एंड एंटी डाउन, बट दीज आर नॉट द ओनली क्वार्क्स देयर। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट एल्स इज देयर। तो चार्म क्वार्क, एंटी चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, then you have top quark, anti-top quark. You have bottom quark, anti-bottom quark. तो एक प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स नहीं होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वार्क्स, बट यस वैलेंस क्वार्क वो 3 ही। दिस वॉज अ बिग मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैड, एंड सिमिलरली यू कैन से कि यहां पे अगर आप न्यूट्रॉन को देखते हो, अ सिमिलर स्टोरी इज देयर। चार्म, एंटी चार्म, स्ट्रेंज, एंटी स्ट्रेंज, लॉट्स ऑफ क्वार्क्स ओवर देयर। So now let me take you towards the fun fact in all of this. So here's the fun fact number 1. Here's the mind exploding fact number 1 in Quarks. And what does this say? This tells you that protons are held together by a strong force through a particle called gluons. अच्छा, gluons इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ग्लू जैसा लग रहा है। ग्लू क्या करता है? Glue is meant to stick things together. So this gluons are the particles that helps that strong force so that the proton remains intact. Proton is made of lot of quarks, but who is getting all of that together? That particle is gluons. आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो दिस डायग्राम कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ये 3 वैलेंस क्वार्क्स हैं, और ये इतने सारे जो रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू डिफरेंट कलर्स हैं, दीज आर ऑल एक्स्ट्रा क्वार्क्स। जो वहां पे ये पूरा एक प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है, दिस इज सिमिलरली न्यूट्रॉन का भी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो अगर मैं यू की जगह डी कर दूं, राइट।
तो यहाँ पे क्या है, ये जो सारे लोग आसपास में अटैच्ड हैं, दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्लूons. I hope आपके पास ये first fact you are able to understand pretty well. Let's take you towards the second fact now. And the second fact says कि protons have millions and trillions of quarks and antiquarks. Like I told you, बहुत सारे quarks होते हैं. You will not say कि तीन होते हैं. If you want to say three, please call it valence quarks. Let's take you towards the fun fact number three. Fun fact number three says that quarks and antiquarks ये आपस में भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, नए बन जाते हैं. तो दे आर कोलाइडिंग, दे आर डिस्ट्रॉइंग ईच अदर, देर आर न्यू दैट आर क्रिएटेड. इट्स sort of how life is. There are people who die, then there are people who are born. So quarks and anti-quarks, you can relate quite so much to life. Right. Okay, let's move towards our fun fact number four. And fun fact number four says that only, this is like my best, I love this fact, that only 1% of the proton mass is quarks. You will say, sir, you just told us that protons have so many quarks, then obviously the mass of the proton should be of the quarks itself. Now, why is it that only 1% of the proton mass is quarks? The reason is somewhat given by one of the greatest physicists of all time, and that happens to be our fun fact number five. That Einstein gave an equation. Everybody knows this equation, no? We're just trying to see it out here. How does it work? E equal to mc square. E over here is the energy, right? And m over here is the mass. So the point is that if a proton has only 1% of mass in quarks, actually the quarks are colliding, they are destroyed, there are new quarks that are being created. So all this while there is a lot of energy involved, and that energy can be related to mass through the Einstein's equation, and that is where 99% of the mass is. So you can think of it now that in a proton, which we knew some time back as the most fundamental particle, inside that there are particles called as quarks. There are so many of it. They keep colliding, they keep creating new ones. Some are destroyed, some are created new, and all this energy is what constitutes the mass in a proton. So I hope that you understood one of the very difficult topics to be understood, one of the biggest misconceptions that a lot of students have. I hope you can explain it now to somebody else. But if you want to make sure that your learning is not stopping here, make sure you join ODA class. This is the best app in the nation right now, and that is why we bring you all these awesome concepts. You want to learn more? I'll tell you what, you need to download this app to make sure that you are not missing out on anything that all the rest are not knowing. So, if you want to download the ODA class app, I'll tell you the way to do so. But there is one more thing I would like to add, that once you come here, it's not only that you learn, you also start to earn. What exactly is it that you earn? You earn some all important coins. I'll tell you how to join the free sessions. I'll tell you how to take in those coins and how you can get to those goodies. Let me take you there because I know you are wanting to know this, right? It's a three-step process, like we have the three valence quarks. So, step number one, you go out on the Play Store, you download the ODA Class app. It's simple. You open Play Store, you search for ODA Class, and you press on the install button. Once you press on the install button, it's there on your phone straight away. We go towards the step number two, and all you need to do is log in with your mobile phones. Once you log in over here, you're almost ready to go, because now comes the step number three, that once you start attending those classes, you can see there's a lot of goodies to be won through those coins that you are earning in those free sessions, in those open sessions, in those demo classes. And once you have enough coins, you can redeem it for all these wonderful goodies that we have there just for you. Finally, I would like to say that if you are downloading the ODA app, you are going to win a lot of things, not only learn once you come there. So make sure that if you have
understood something, if you are happy to know that there is somebody out there to help you, you support our cause and you download the ODA Class app. There is a link in the description below. You can come into our 1 week course where we can help you accelerate your learning like anything. You know what is the fastest thing that is there? If you say that is light, I'll tell you, your learning is going to be even more faster once you join us. This was all that I had from here. If you loved this session, if you want more videos for us to be uploaded for you, just make sure that you like and share. And if you don't want to make sure that you are killing the vibe, make sure you also subscribe. Thank you, guys.